गुड इवनिंग एवरीवन। आज हमारे साथ है एडवोकेट जय निरुपम। ही इज एन alumnus ऑफ द नेशनल लॉ स्कूल एंड ही प्रैक्टिसेस स्पेशली इन द रेरा मैटर्स, जो रियल एस्टेट से रिलेटेड रेरा के अंडर जो मैटर्स आते हैं उसके अंदर ये गुड़गांव के अंदर प्रैक्टिस करते हैं। और उन्होंने अभी तक अपने काफी क्लाइंट्स को बिल्डर्स के खिलाफ खासकर कुछ मुकदमों में अच्छी खासी रिलीफ दिलवाया है। सो आज हम इनसे बातचीत करेंगे समझने के लिए कि रेरा में एक रिटेल होम बायर को क्या क्या सेफगार्ड्स अवेलेबल है, किस तरह से एक रिटेल होम बायर रेरा के एक्ट के अंदर अपने राइट्स को प्रोटेक्ट कर सकता है। सो वेलकम ऑन द शो जय, एंड आई विल स्टार्ट विद आस्किंग सम क्वेश्चंस, एंड वंस आई एम डन देन वी कैन ओपन द हाउस टू क्वेश्चंस फ्रॉम द ऑडियंस। सो मैं आपसे पहला ये सवाल पूछना चाहूंगा कि रेरा में क्या सारे रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स कवर होते हैं, या रेरा कोर्ट में अनरजिस्टर्ड जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको भी एक आदमी, मतलब एक बायर या एक प्रॉपर्टी बायर अपने रिलीफ के लिए जा सकता So first of all, sir, I would like to thank you for having me. Coming back to your question, क्या सारे projects आते हैं under the ambit of RERA या सारे projects register होने चाहिए? So the thing is, sir, the law says that from the commencement of the act, which was back in 2016, है? हाँ, the projects which did not have the completion certificates, even the upcoming projects or the ongoing projects which did not have the completion certificate, have to be registered under the act. So that is the first part of your question. Now coming to the second part, that whether someone can approach RERA with regards to a project which is not registered with RERA. So I would say, sir, that in today the law is quite settled that a project which is not registered with RERA, even in that case, a home buyer or a property buyer can certainly approach RERA and file a case against the promoter in case there are certain duties of the promoters which has not been fulfilled. For example, if the builder had promised that there would be a clubhouse, or let's say there would be a community center given to the property buyer. The property buyer has taken the possession, however, the construction of the community center has still not been done. In that particular scenario, the home buyer can certainly approach RERA, and the RERA can direct the builder to honor the commitment. ओके। सो 2017 से तो वैसे ही 6 साल हो गए, तो और जिसने 2015 में स्टार्ट किया होगा 2 साल में बनाया नहीं होगा, तो पिछले 7-8 साल के तो सारे प्रोजेक्ट कवर हो गए। उसके अलावा भी अगर अब किसी की कोई कमियां हैं तो वो फिर भी रेरा को अप्रोच कर सकता है। हाँ, बिल्कुल कर सकता है सर, इन केस देर आर सर्टन ड्यूटीज ऑफ द प्रमोटर्स जो फुलफिल नहीं हुए हैं। राइट, हाँ। व्हाट आर दी सेफगार्ड्स अंडर रेरा, मतलब कैसे हम ये कह सकते हैं कि रेरा जो है एक रिटेल प्रॉपर्टी बायर के इंटरेस्ट को सेफगार्ड करेगा? अलग अलग प्रावधान क्या है कानून के अंदर? To answer this question, I would just give you a pretext, sir, that prior to the commencement of this RERA Act, there was no other law, or let's say no other act which governed the rights and remedies of the home buyers. What has happened after the RERA has commenced is that the act has given one, certain rights to the home buyers, second, certain remedies to the home buyer. So now a home buyer has certain rights. Let's say, for example, there is a certain date on which the builder has to give the possession of a property as per the builder buyer agreement. And if he defaults on the same, then the remedy given by the law to the property buyer is that he can approach the appropriate RERA court, file a case against the builder, and the property buyer is entitled to get the entire refund if he wants to, along with interest, and on top of that, the compensation for the mental agony that the property buyer has gone through. Okay. सो मतलब रेरा में अगर डिफॉल्ट है तो उसके अलग अलग प्रोविजंस के अंदर रिफंड भी पूरा मिल सकता है? बिल्कुल सर। इन केस अगर जो डेट ऑफ डिलीवरी ऑफ द प्रॉपर्टी है उसके बाद भी अभी तक पोजीशन नहीं दिया गया है, तब द प्रॉपर्टी बायर इज एंटाइटल्ड टू गेट द एंटायर रिफंड along with the interest. मलिक साहब थोड़ा रुक करके सवाल जवाब पर आएंगे, बीच में नहीं आएगा। तो मेरा आपसे अगला सवाल ये होगा कि इसका स्ट्रक्चर कैसे है रेरा कोड का?
कैसे हम किस कोर्ट में जाएं, कहाँ पर जीतें, कहाँ पर अपील हो, क्या व्हाट इज हाउ इज इट स्ट्रक्चर्ड? जैसे नॉर्मली अगर हम बात करते हैं तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं, फिर हाई कोर्ट है, फिर सुप्रीम कोर्ट है. हाउ आर दी रेरा कोर्ट स्ट्रक्चर्ड? Right. So to break down the structures of this RERA court, I would say that first of all, the main thing that we have to look at is the jurisdiction. जहाँ पे हमारी प्रॉपर्टी लोकेटेड है और हमारे साथ कुछ डिस्प्यूट हुआ है जिसके रिगार्डिंग वी हैव टू सीक द रेमेडी, देन वहाँ उस जुरिस्डिक्शन के जो रेरा अथॉरिटी है, रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी, will have to approach them first. Now the case is decided. Let's say we do not get a favorable relief. So what next? So the next step is we approach the Real Estate Regulatory Appellate Authority, the Appellate RERA Authority. Now, let's say again we do not get a favorable relief from the Appellate Authority as well. In that case, we approach the Honorable High Court of that particular jurisdiction. And then, of course, if still we do not have a favorable relief, then we always have the right to approach the Honorable Supreme Court. Okay. So मैं आपकी बात को अगर समझा हूँ, पहले रेरा जिसका जुरिस्डिक्शन है स्टेट वाइज, उसके बाद रेरा की अपीलेट, फिर अपीलेट के ऊपर हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट. करेक्ट. ओके. अब एक बात मुझे और अब आपसे यहाँ पे, ये थोड़ा सा मेरा पर्सनल चुभने वाला, मतलब ये मेरी तकलीफ है इसलिए मैं पूछ रहा हूँ. मैं रियल एस्टेट में काम करता हूँ और मेरा अनुभव ये कहता है कि जब रियल एस्टेट में बदमाशी होती है तो कोई इंडिविजुअल लड़ाई नहीं होती है. इट इज नॉट कि बिल्डर ने मेरे घर के बाथरूम के अंदर फिक्सचर्स ठीक नहीं लगाए तो मैं उसको रेरा में लेकर के जा रहा हूँ. और इट इज यूजुअली दैट बिल्डर हैज डिलेड द प्रोजेक्ट, तो सभी के साथ डिले कर दिया है, या क्लब हाउस नहीं बनाया तो सभी के साथ में, मतलब द डिफॉल्ट इज ऑन अ मच वाइडर स्केल. अगर 1000 होम बायर्स हैं या 500 होम बायर्स हैं या किसी कमर्शियल प्रॉपर्टी में 200 शॉप ओनर्स हैं तो सबके साथ गलत किया है. सो आर देयर एनी प्रोविजंस अंडर रेरा जहां ये सब लोग मिल करके एज अ ग्रुप, एज अ कलेक्टिव बिल्डर के खिलाफ कोई एक्शन ले सके? Okay. So first of all, so there is no provision RERA में जहाँ पे a class action suit is maintainable. This is what we call as a class action thing. But however, just to give you a solution, कि अगर there is a collective amount of people who want to seek a relief together because they have all been similarly placed, उनके साथ same तरीके का जो है violation हुआ है, in that case they can always approach the consumer forum. The consumer forum always entertains class action suit. There is no bar. And having said that, there is also another forum which is called the NCLT or the National Company Law Tribunal. If a collective group of people wants, they can also approach the NCLT to say that we have been, there's a violation and our money is stuck and we need to recover that money from the buyer. In these kind of cases, there are two solutions. A collective group can either approach the consumer forum or NCLT. However, the same cannot be done in the RERA. तो रेरा में क्या उपाय होगा जी अगर 10-20 लोग हैं एक साथ? Just because RERA Act defines a particular allottee as a single person, so that is why each individual have to file their own cases, independent cases. उनको एक साथ क्लब करके हम जज साहब से नहीं कह सकते कि हियरिंग एक साथ करवा लो? हियरिंग बिल्कुल एक साथ हो सकती है सर. हम प्लीड कर सकते हैं कि all these cases are of the similar nature, so it can be tagged together and heard together. However, एक केस में there has to be one individual as the complainant. Okay. इसके लिए आप, मतलब ये थोड़ा सा एक कंट्रोवर्शियल सवाल होगा मेरा, तो यू कैन चूज टू गिव अ एवेजिव आंसर आल्सो, बट डू यू थिंक दिस इज अ फिट सिचुएशन wherein the legal community approaches the honorable supreme court and asks for चेंज इन दी एक्ट कि भाई इसमें क्लास एक्शन अलाउ होना चाहिए? बिकॉज बिल्डर तो प्रॉब्लम करता है तो इट इज ऑल द प्रोजेक्ट बायर्स नॉर्मली दे सफर. Right. So I think one can certainly do that, and I think that is also the need of the hour.
The one thing we have to consider over here is that RERA is comparatively a new act. It came like 5-6 years ago. So there's a lot of developments that are yet to happen, and that will happen certainly. And I think that we're discussing right now might happen soon enough. ओके मैं आपसे, अब आपने बोला कि ये नया एक्ट है सब कुछ, चलिए मानता हूँ उस बात को। तो अब जैसे जैसे ये एक्ट आया है और सेक्टर इज गेटिंग ऑर्गेनाइज्ड, तो एक्चुअल में एक्ट काम भी कर रहा है, या मतलब इट इज जस्ट अ पेपर टाइगर की एक और कोर्ट बन गया जी, वहाँ अब वकीलों को फीस और मिल जाती है, बाकी बायर्स हैं या परिवादी है वो तो घूम ही रहा है, उसको पहले भी न्याय नहीं था अब भी न्याय नहीं है। No. First of all, so the thing is, as I said earlier as well, कि previously there was no law at all to govern the rights and liabilities of the promoter as well as the buyer. Now there is something which is codified, which defines कि a particular right क्या है, which defines a particular violation क्या है. So in that sense, it is a great relief to the buyers to go ahead and challenge the inaction or the violation of the promoter or the builder to secure their own interest. Now, secondly, what you asked is that impactful? I would say that in my experience, I have seen that there is an impact, although not a great impact. But again, we have to again see that Rome wasn't built in a day. But now I have a clientele wherein corporates and other builders do approach me for legal advices, legal opinions with regards to the fact that will our so-and-so action be contrary to the law laid in RERA? Will we be held accountable to the court if we do so-and-so? So now people, or let's say the professionals dealing in this particular industry, have started asking themselves the question that should we do this? Because if we do, there are going to be consequences. So in that scenario, I think that this is definitely a game changer at all. But it is certainly going to take some time to have a very substantial impact. बट भय तो व्याप्त होने लगा है, धीरे धीरे शुरुआत तो हुई है, कुछ ना कुछ एक इम्प्रूवमेंट की तरफ तो कुछ कदम बढ़े। Absolutely. अच्छा, मुझे एक बात बताएं, क्या ये कमर्शियल प्रॉपर्टीज पर भी लागू होता है या सिर्फ रेजिडेंशियल बायर्स को ही इसके अंदर रिलीफ है? Right. When the act was introduced in preliminarily, that time it only dealt with the rights and liabilities and remedies with regards to the home buyers only. And with time, the law has changed, and now the RERA includes the rights and liabilities of all kinds of property buyers, whether it's a home buyer, whether it's a buyer of a commercial property. So every kind of buyer is now under the ambit of the act. And yes, to answer your question, the act does apply to all sorts of buyers, including the commercial property buyers. Okay. अब सर देखो, मैं आपसे एक दो और सवाल पूछता हूँ बिना नाम बताए। आप एक दो कोई ऐसे केसेस जो गुड़गांव में ही बता दें जहाँ कोई पर्टिकुलर रिलीफ किसी को मिला हो किसी बिल्डर के अगेंस्ट। क्लाइंट का नाम ना बताएं, बिल्डर का, ये तो ओपन कोर्ट के वो है जो काम, मतलब न्यूज में भी आते रहते हैं कि कोई स्पेसिफिक थिंग जहाँ एक इस तरह का रिलीफ मिला। There have been, as you rightly pointed out, so I mean, it has come out in the newspapers and a lot of public platforms as well, जहाँ पे ऐसे kind of reliefs मिले हैं, but I think it will be kind of a conflict of interest for me to name the companies or the corporates. So I कंपनी का नाम ना बताएं, वैसे ही बता दें कि एक्स, मतलब बिल्डर का नाम भी मत बताइए, सिर्फ ये बता दीजिए एक बिल्डर के खिलाफ इस तरह की वायलेशन हुई तो ये रिलीफ बायर को मिला। Right. So there have been instances. So recently there have been instances even in Gurgaon, जहाँ पे commercial property के लिए people had invested. There were situation wherein the same property was not delivered within the stipulated time, wherein the court has directed that the property has to be either delivered within X amount of time or the entire amount has to be refunded along with interest to the investors.
And at the same time, the court had also said that if the possession is also given within this particular of time, then also the delay penalty charges has to be imposed on the builder from the date of the delivery till the date of the possession is handed over. अब मैं आपसे जो पूछूंगा मेरे तो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस से पूछ रहा हूँ वकील साहब, मैं तो वकील हूं नहीं, मैं तो बिल्डरों को और बायर्स के साथ डील करता हूँ। बिल्डर इतना बदमाश है, कोर्ट का ऑर्डर आ जाता है तब उसको पूरा नहीं करता, तब अब क्या करें? कोई है इसका उपाय, या मतलब कि फिर तो कोर्ट ऑर्डर इज जस्ट पेपर, मेरी फाइल में एक कागज और ऐड हो गया? Right. So, once there is a judicial order, let's say the RERA pronounces an order wherein it directs a certain builder to, let's say, refund the entire amount along with interest. Now, the general practice is that the same order has to be complied within 90 days of the pronouncement of the order. So the builder has 90 days to comply. In case the same is not done, then the holder of the judgment, I mean the allottee, जिनके favor में judgment हुआ है, they always have a right to approach the court through an execution petition, wherein they will pray that this court had directed so and so builder to comply with this order, but the same has still not been done. Now, what will happen is the court will ask the builder that you have to comply with this order within, let's say, next 2 months or next 2 weeks. If the same is not done, even then there are so wide powers with the court that the court can direct the district magistrate to seize the property of the builder and send it for auction, recover the money, and then pay the allottee jitna bhi amount direct hua hai pay karne ke liye. This is one part. Secondly, if the court deems fit that yes, there's a non-compliance of a nature which is so big that we have to take a very extreme step and we have to set a precedent, then the court can also imprison the builder, wherein the builder can be sent to the jail. So there are what I can say is that certain consequences jahan pe we can be ensured that if a builder does not comply with the order, then he has to face a lot of grievous consequences. अब सर मेरा आखिरी सवाल है, उसके बाद आई विल ओपन द फोरम टू ऑडियंस, और मैं अगेन प्रैक्टिकल से पूछूंगा बिकॉज जो कानून बनाते हैं या आप जैसे वकील साहब हैं या जो जज साहब ऑर्डर्स पास करते हैं, ये सब जितने भी हैं ये यूजर्स नहीं होते, इन्होंने वो परेशानियां नहीं झेली होती हैं जो यूजर्स झेलते हैं, जो होम बायर्स या कमर्शियल मतलब प्रॉपर्टी बायर्स झेलते हैं। और बिल्डर जो होता है उसके पास में काफी रिसोर्सेज होते हैं और वो इनसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग पोजीशन में होता है। तो एक जो अक्सर मैंने बात देखी है कि बिल्डर को आपने 95% का पेमेंट कर दिया है जी, पेमेंट तो मेरे को 1 करोड़ देना था, 90-95 लाख दे दिया है, घर मेरा मुझे मिला नहीं है या दुकान मेरी मेरे को मिली नहीं है। अब बिल्डर ने डिले भी कर दिया, सब कर दिया, मेरे को बीच में बहाने मारता रहा, मैं अभी बना रहा हूँ, डिले हो गया, आज कोरोना हो गया, कल ये हो गया, आज मुझे सीमेंट नहीं मिला, मेरे बच्चा बीमार हो गया, उसके पास दुनिया भर के बहाने हैं। फिर वो फाइनली जब बोलता है कि हाँ जी अब देता हूं मैं आपको, तो वो सारी वन साइडेड टर्म्स एंड कंडीशंस पे आपसे साइन करा लेता है। और मैं क्या, अच्छे से अच्छा आदमी भी साइन करता है क्योंकि उसका पैसा फंसा हुआ होता है, नहीं करोगे तो आपकी दुकान की मकान की चाबी नहीं देगा, फिर कोर्ट में जाओ, फिर 5-6 साल लड़ो। तो मैं उस दबाव में, मेरे जो पैसे लगे हुए, मैं ब्याज भी दे रहा हूँ, मैं ईएमआई भी दे रहा हूँ, मैंने घर लिया है तो घर का किस्त भी दे रहा हूँ, वो सब करके बिल्डर जहां जहां बोलता है मैं अंगूठा लगाता चलता हूँ। जैसे पुराने टाइम में वो किसान को नहीं होता था कि जहां जहां साहूकार ने बोला वहां अंगूठा लगा दिया। ऐसे में इज देयर एनी रेमेडी फॉर मी कि अगर मैंने आज किसी प्रेशर में वन साइडेड बातें माननी पड़ी मुझे बिल्डर की, so can I approach the court after having agreed to these one-sided forged signatures also? Because my condition was such I could not have disagreed to those. Right. So that's a very interesting question, sir, I would say, because even in my experience, I have dealt with a lot of cases of a very similar nature. So what we are talking about over here, more than a violation or anything, this constitutes
what we call in law a unfair trade practice, जहाँ पे the builder, even while he knows that नहीं मैं नहीं दे सकता अभी possession, just to pressurize the allottee or the purchaser, being aware that already the other party is under a lot of pressure, under a lot of burden, paying EMIs and dealing with the loans and everything. So just to capitalize on that situation, what the builder does is the builder very cunningly goes ahead with, forcing them to sign very one-sided agreements, or let's say undertakings, that I undertake that I will accept the possession on a delay of this date, but I will not approach or not raise any dispute in any court on the same issue. So what happens over here is, sir, let me go stepwise. I would say that in such cases, whoever is facing such case, even if there is a huge pressure on them, and when the builder is asking you to sign certain documents which you know that are going against your own interest and against your own rights, then one should do one thing, that one should always ensure to keep on record certain documents. For example, let's say a mail or a registered post saying that even though you were supposed to do so and so, but you have not, let's say, honored your obligation. Now you are forcing me to sign a document, and I am being compelled to sign such a document because I want the possession at the earliest. However, I reserve my rights to go and challenge the same whenever I want to. So by doing this, what happens is that there is something on record which will prove that there was always a protest. There was never a full agreement to the, let's say, unitary or one-sided terms of the builder. Now, coming to the remedy part, that what can be done in this case, or can a property buyer do something even after signing such and such contracts and taking the possession of the property? Now, there is something called as unfair trade practice under the new Consumer Protection Act. The Consumer Protection Act was recently amended just to insert something which deals with the unfair trade practice and what has to be done in these scenarios. So if a person wants to exercise his rights under this particular act, he can always approach the consumer court saying that I have been a victim of the unfair trade practice by the builder. I have been forced into signing such and such documents. I have been forced to sign very unilateral terms and unilateral contracts of the builder. And however, I want to avail my right to seek compensation for the trauma or for the mental agony that I have suffered and have been through for the practice of the builder. And certainly the Consumer Protection Act will definitely, come into the play. So yeah, answering your question, so this is the solution that the consumer or the property buyer can avail in these scenarios. तो मतलब उस वक्त इस तरह के अन्याय के साथ भी लड़ने के लिए कानून में प्रोविजंस हैं. Right, absolutely. All right. So I am done with my questions. Gotta focus on yourself, on your faith, on your dreams, on your mind, on your health, yeah. You gotta work, never tell, keep your head down.